Hello, today we are going to see our next chapter, that is khashaba jadhav. Khashaba jadhav. So there are two pictures on these pages and that are of khashaba jadhav. Have you heard about Olympic Games? Everyone had everyone had heard that Olympic Games held and in different countries. So we in this chapter we are going to see one of the Olympic Games champions, that is Khashaba Jadhav, and who was from India. Have you have you heard about Olympic Games? Sportsmen from many different countries of the world come together for Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletics events like high jump, long jump, running, gymnastics events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches, and many other games. So these are the games held in Olympics. The winners are given gold, silver, and bronze medals. The winners of Olympic Games are given gold, silver, and bronze medals. An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be world champion. As different people comes from across different countries to participate in Olympics. So the winner of this Olympic Games is considered as world champion. Few Indians have won Olympic medals so far. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. In 1947, India got its independence. So, after the independence of India, the first man who won the Olympic medal, means the first man who became world champion of Olympic Games or Olympic game in wrestling in from India, independent India, was a wrestler from Maharashtra. His name was Khashaba Jadhav. Khashaba Jadhav was born in very poor family in a village called Goleshwar in Satara district. But it was a family that loved sports, especially wrestling. Wrestling means kushti. The Kashaba Jadhav was from Goleshwar, Maharashtra, Satara, Maharashtra, and he was from wrestlers family. His father, Dada Saheb, was himself a wrestler. He had five sons. Means Kashaba Jadhav had five siblings. The youngest of them was Khashaba. Khashaba was youngest of them. Dada Saheb himself taught his sons wrestling. They were all very good at it, but best among them was खशाबा. अब जो खुद एक रेसलर है, उन्होंने अपने पांचों बच्चों को रेसलिंग सिखाया और सबसे छोटे खशाबा थे और वो सबसे बेस्ट थे रेसलिंग में. फ्रॉम एन अर्ली एज खशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स. His father took him to see the bouts from the time he was just 4 years old. Means Kashaba, when he was 4 year old, he got an hobby. He got an a hobby of watching रेसलिंग. मीन्स रेसलिंग के जो मैचेस होते थे वो अपने फादर के साथ जाते थे और देखते थे, उनको एंजॉय करते थे. ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर एंड वॉच द बाउट्स. हियर बाउट्स मीन्स द मैचेस ऑफ रेसलिंग. एट 10 ही वॉज ए the youngest get into the akhada. Soon it became clear that he was also the best, not only in own akhada but in the whole area. In his whole area, he was the best wrestler. Kashaba loved other sports too. He was fond of kabaddi, mulk, mulkhambh, running, swimming, and gymnastics. Here, Kashaba loved and other sports too, like kabaddi, mulkhambh. Means there is one khamb, or we can say one pillar, and
uh, there is a set timer and the player should climb on the kham. So that is Mool kham. Khashaba also loved that sport, running, swimming, and gymnastics. He took part in all of this. He became strong and alive, agile. He he loved to discuss sports with his friends. Now he went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. Khashaba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was champion. Therefore, he was sent to wrestle at state level and national level. अब कशाबा जाधव ने राजाराम कॉलेज कोल्हापुर में एडमिशन ले लिया था क्योंकि वहाँ पे रेसलिंग को बहुत इनकरेज किया जाता था. तो डिफरेंट डिफरेंट रेसलिंग बोर्ड्स में मीन्स रेसलिंग फाइट्स में वो पार्टिसिपेट करते थे और वो इस एरिया के चैम्पियन उस कॉलेज के चैम्पियन बन चुके थे. देयरफॉर कॉलेज की तरफ से उनको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भेजा जाता था रेसलिंग करने के लिए. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स द फर्स्ट द 5 rings are there and these are the symbol of Olympic games. Here is wrestling styles, the games which are played in held in Olympics. So first of all there is wrestling, then weightlifting, hockey is there, football is there, boxing is there, then archery is there. Here you can see different types of pictures are there. Khashaba Zadav became famous at national level too. He beat the national champion Niranjan Das in 1948. That is why it was decided to send him to International Olympic Games. Okay, so at that time in 1948 the national champion means champion of India in wrestling was Niranjan Das and Kashaba Jadhav beat him too in wrestling. He won the match against the Niranjan Das. He won the bout against Niranjan Das and then it was decided to send Khashaba Jadhav in Olympic Games, that is International Olympic Games. When Khashaba Jadhav took part in Olympic Games for the first time, he found that Indian and international rules were different. Also, he was used to wrestling in Ethan Pit at the Olympic Games. The bouts were held on mat. In spite of these differences, Kashawa won 6th place of 42 out of 42. Now, खशाबा जाधव उनको मैट पे नहीं मिट्टी में खेलने की आदत थी रेसलिंग. तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक्स में मैट पे खेलना था तो भी उन्होंने 42 जो प्लेयर्स थे उनमें से 6th पोजीशन उनकी हो गई थी. ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड एवरी 4 ईयर इन 19 ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स. हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं. इन 1952 कशाबा जाधव विश टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स अगेन. अब ओलंपिक गेम्स में जो फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्ट लिया तभी उनकी 6th पोजीशन आ गई थी 42 में से. अब उन्होंने 1952 में फिर से ओलंपिक गेम्स हो रहे थे तो फिर से उन्होंने सोचा कि मैं फिर से पार्ट लूँगा. बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. ही हैड प्रूव हीज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स. अब एक बार उन्होंने पार्ट ले लिया तो ऐसे अकेले नहीं है वो कंट्री में कि जिनको ओलंपिक गेम्स में जाना है. सब लोग ट्राई करते. तो ऑफिशियल्स जो रहते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं या बड़े एडमिनिस्ट्रेशंस रहते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, तो उनका थोड़ा अपोजिशन था. ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैड टू स्पेंड their own money for traveling and staying in place where the games were held. In that time, the government didn't do any expenses on the players. The players itself have to pay all the expenses on the traveling and the place where the games held. It was very expensive. Kashaba Jadhav did not have that much money and he did not get any money from the government. At last, the principal of Rajaram College gave his own house to get money. Other people in Khashaba's village also helped.
अब उनके पास मनी नहीं था, पैसे नहीं था खशाबा जादव के पास, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प नहीं होने वाली थी। तो जिस कॉलेज में वो पढ़े थे उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना खुद का घर गिरवी रख के वो कशाबा जादव को पैसे दिए, और कशाबा जादव के विलेज के भी लोगों ने उनको हेल्प किए। इन द 1952 ओलंपिक्स वेर हेल्ड इन हेलसिंकी हेलसिंकी There, Khashaba Jadhav had to face opponents from Russia and Gulf countries. He won the first 5 bouts quite easily. He won each bout within 5 minutes. अब जो ओलंपिक गेम्स थे वो हेलसिंकी में हो रहे थे, और वहाँ पे उनको रशिया और गल्फ कंट्रीज से आए हुए अपोनेंट्स को फेस करना था, और 5 मिनट्स में वो जो बाउट्स थे, मीन्स जो मैचेस थे, वो जीत जा रहे थे। पहले 5 मैचेस वो जीत चुके थे। देन he had to face he had to face wrestler from Japan. They were both well matched. The bout lasted from 15 minutes. Kashaba lost the match by just 1 point. He was exhausted after the bout. He was asked to wrestle with Soviet wrestlers immediately. अब देखिए, पहले क्या हुआ, ये 5 मैचेस वो जीत चुके थे आसानी से। फिर जापान के साथ, जापान कंट्री से आया हुआ रेसलर, उसके साथ एक मैच थी। तो उस मैच वो 15 मिनट तक चली, और कशाबा जादव सिर्फ 1 पॉइंट से वो मैच हार गए। और क्योंकि ये मैच इतनी टफ थी, दोनों प्लेयर्स एकदम स्ट्रांग थे, तो वो एकदम थक चुके थे, और उनको इमीडिएटली, मीन्स ये मैच ख़त्म होने के बाद अचानक सोवियत रेसलर, जो रशिया की जो अलग हुए हैं सोवियत नेशंस, वहाँ के रेसलर्स से इमीडिएटली फाइट करनी है। दिस वाज अगेंस्ट रूल्स, क्योंकि इमीडिएटली नहीं करना चाहिए कोई भी एक मैच के बाद दूसरी मैच। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स हाफ एन आवर का गैप रहना चाहिए एक मैच के बाद एटलीस्ट। Kashaba lost in the bout with Soviet wrestler. Still, he had won bronze medal by finishing third. अब ये मैच वो भी हार चुके थे सोवियत रेसलर्स के साथ, क्योंकि वो रूल के खिलाफ जाके उनकी मैच की कराई गई थी, और तो भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता थर्ड मैच फिनिश करने के बाद। When Kashaba returned to from Helsinki, many people honored him. The people in his village gave him grand welcome. A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village, Goleshwar. The villagers carried their hero home to the sound of dolls. अब वो तो भी उनके विलेज में जब वो पहुंचे तो उनके लिए सेलिब्रेशंस की गई। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर द villagers celebrated Kashaba Jadhav's victory with dhols and bullock carts, and many peoples were there. Kashaba Jadhav did not forget those who helped him. After winning the Olympic medal, he played the first bout to raise the money not for himself but for principal who had given his house for sending Kashaba to Helsinki. The principal got his house back again. अब देखिए, आने के बाद उन्होंने किसी को भूला नहीं जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज। तो आने के बाद जो उन्होंने फर्स्ट बाउट मीन्स फर्स्ट फाइट की, जो फर्स्ट मैच की, उसके जो पैसे जीते, उसके बाद उन्होंने वो अपने प्रिंसिपल को दे दी ताकि वो अपना घर वापस ले सके, और उन्होंने अपना घर वापस ले लिया। और खशाबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और facilities. Today, sportsmen have many facilities. Shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? जैसे कशाबा जादव के पास पैसे ना हो के भी उन्होंने इतना प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी अपनी कंट्री के लिए इतना सब कुछ किया। और आजकल के जो स्पोर्ट्समैन है उनको तो सारी फैसिलिटीज़ भी है। और आज अगर आप सोचोगे कि मुझे किसी स्पोर्ट्स में एंटर करना है तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो
हमें भी हमारी मदरलैंड, हमारी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। खशबा जादव इतने प्रॉब्लम फेस करके भी इतना कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो हमारे टाइम पे सारी फैसिलिटीज़ है। सो वी शुड थिंक अबाउट इट एंड try to honor our motherland. So today's homework is to write question answers. I'm going to send you picture along with this video. So do complete your homework.